हेलो स्टूडेंट, तो इधर हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है that the ratio between the speed of two train is 7:8. If the second train runs at 400 kilometers in 4 hours, then the speed of the first train is. Here हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है, that is ratio between the speed of two train. तो लेट अस अज्यूम के एक ट्रेन है, उसकी स्पीड v1 है, दूसरे ट्रेन की स्पीड v2 है और उसका रेशियो है 7/8. Now another data available with us is this: for second train, the distance covered by train x2, it is given as 400 kilometers and time for that distance is 4 hours. तो फिर इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, so that would be equal to 400 by 4. So our answer would be 100 किलोमीटर पर आवर. नाउ हमारे पास रेशियो अवेलेबल है दोनों ट्रेन की स्पीड का, और वो रेशियो है v1 बाय v2 इक्वल टू 7/8. अगर v2 इधर चला जाएगा देन v1 इक्वल्स टू 7/8 मल्टीप्लाई बाय v2. 7/8 multiplied by v2, that would be equal to 7/8 multiplied by 100. If we simplify this, then it would be 700 divided by 8, which is nothing but equals to, if we divide 700 by 8, then 8, 8, 64, it will 60, 8, 7, 56, it is 4, 0.5. So the answer would be 87.5 kilometer per hour. Then option D is the correct answer to the question, that is 87.5 kilometers. तो यहाँ हमने इस जो दोनों ट्रेन थी उसकी स्पीड के रेशियो से हमने पहले जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी स्पीड मेजर की है.